हम फिर से कहना चाहते हैं, सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। बड़ा दुखद रहा। नीट पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप लोग चर्चा करें, राहुल जी खड़े हुए, चर्चा नहीं करनी है और सदन नहीं चलाना है। ये दुखद है कि अब जिन्होंने इन लोगों को चुन के वोट दे के भेजा वही लोग देख लें कि सबके टैक्स का पैसे का नुकसान हो रहा है। चर्चा करनी चाहिए, नीट पर चर्चा करने के लिए पार्टी तैयार है, अध्यक्ष महोदय ने कहा। इसके बावजूद लेकिन वो कह रहा है कि हमारा तो माइक ही बंद कर दिया था। माइक जो है नहीं बंद कर दिया गया है। तानाशाही चल रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करना था, उसके बाद इस नीट पर चर्चा की बात उन्होंने तो मंच पर कही है सदस्य महोदय, अध्यक्ष महोदय। आज चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थी और राष्ट्रपति जी ने स्वयं नीट के घोटाले की चर्चा करते हुए यह कहा है किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। आज अगर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो उन्होंने कहा है उसी पर चर्चा होनी है। आप एलओपी है, आपको जितना समय 1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय अलॉट है आप कर सकते हैं। आप ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर डिस्कशन का अर्थ है कि सभी सत्ताधारी दल और सभी नेता विरोधी दल इन मुद्दों पर जितना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इंटेंशन यह नहीं है कि मैं नीट पर बोलूंगा। इंटेंशन यह है कि मैं अगर एलओपी के तौर पर 1 घंटे में बोलूंगा तो मेरी 100 गलतियां पकड़ी जाएंगी और इस डर से राहुल गांधी चर्चा नहीं कर रहे हैं। Now, you heard what the BJP said and what the NDA MPs have to say when it comes to the opposition's charge of the government not allowing a discussion. But the opposition too is hitting back, sharpening its attack on the government on the NEET issue. Listen in. देखिए, हमारी पार्टी ने, मैंने खुद 267 दिया है राज्यसभा में। हम चाहते हैं कि सारे काम को सदन प्रस्ताव रख के नीट पे डिस्कशन होना चाहिए कि एनटीए कैसे काम कर रही थी, वो भी बावजूद क्यों हो। 2017 में एनटीए बना है और नीट परीक्षा हो, यूजी हो, यूजीसी हो, सरेआम बिहार में इतने लोग पकड़ाए हैं और उसके बाद मालूम चल रहा है कि पर स्टूडेंट पैसे लिए जाते थे। काफी कुछ खुलासा हो रहा है और सबसे अहम बात है कि सरकार ने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लिया और कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। कई टाइम लग गया आपको ये मानने में कि पेपर लीक हुआ है। Government has become a paper leak, and record number of papers in the last few years have been cancelled or rescheduled in paper leak. But NEET, which is such an important national paper, that got leaked, and there is ample evidence that it got leaked. But the government is still not either decided to reconduct it, just proceeding on it, and Dharmendra Pradhan ji has not taken responsibility. Therefore, Rahul ji raised this issue in a manner. He said that this is a national issue of national interest. Let's raise it, rising above all the political lines. And there's breaking news coming in. The 7-member high-level committee formed by the Centre for the Reforms in Examinations and the Education Sector has also released a form to seek suggestions, views and ideas from various stakeholders, especially students and parents in this very regard. And that's the latest. We'll get you more details on the same. But for viewers just joining us, there is a 7-member panel that was in fact formed by the government. That 7-member panel is headed by former ISRO chairman Dr. K. Radhakrishnan, and that
panel has now released a form to seek suggestions, views and ideas from various stakeholders, especially students and parents, when it comes to the entire exam crisis. So the attempt is now to bring in more stakeholders, to take their suggestions on board and finally prepare a report on these very recommendations. Ankit is joining us. Ankit, take us through the details. All right, we seem to have an audio issue with Ankit, but we'll go back to him right as we fix it. But the latest that's coming in at this point of time, the 7-member panel that has been formed by the government after the entire exam crisis snowballed, that panel has now, in fact, put out a form. It's released a form and it is seeking suggestions and ideas from various stakeholders, especially from students, to assuage them and their parents to ensure that they have a say in this very regard when it comes to the reforms. So we have Shivani, who's also with us. Now there is this panel that was formed, this expert committee panel that was formed by the government. Shivani wants stakeholders to have a say, to give in suggestions, and that's why they've in fact released a form and they've asked for these suggestions. That's how there is an attempt to assuage students, but when it comes to the politics, there's absolutely no let-up. Sagarika, Dr. K. Radhakrishnan, who's the chairman and former chairman of the ISRO, heads this committee with the other 6 members. The 7-member committee has now brought a form. This committee was formed on 22nd of June by the government after the irregularities were formed and a lot of chaos in the NEET examination. So now this committee has brought a form in which suggestions are being called for from the students, from the parents and all the other stakeholders too, so that there is a foolproof system that can be made so that there's no irregularity in these kind of entrance examination in the future. And also we see that the investigation is going on. So taking more and more suggestions and then implementing them is the idea behind... So Shivani, stay with us. Let's go across to Ankit, who in fact has that feedback form with him and he's getting us those details. Ankit, what does the feedback form go on to say? So here's what the Education Ministry says first, Sagarika. We'll come to the form. Comprising members from government organizations, academia and higher education institutions, the committee aims to recommend reforms in the examination process, enhance data security protocols and review the structure and ops of the NTA. The committee is seeking suggestions, views and ideas from stakeholders, particularly students and parents, from the 27th of this month to July the 7th. Now, here is the link, so we've clicked on it. As you can see, this is now the website of the Ministry of Education, innovateindia.mygov.in. Even the cover image is now changed to seeking suggestions for this form. If you were to click this form, you would go to a site where you would have to give a login, and I presume the form is behind there. We are going to be logging in and opening it, and we will bring you more details of what is in the form. All right, so that's the latest that's coming in. Thank you, Ankit, for getting us all those details.